Subscribe our channel. Dawn vocabulary with Urdu meaning. Recently, I was asked to conduct a professional development session for teachers on positive classroom culture. I began by asking them what a positive classroom meant in their context. I got a variety of very different answers, which got me thinking about how we perceive the needs of our learners. Some teachers seem to believe their students can only learn in an environment of tough love, and that they'd recognize the value of that experience once they transition to adulthood. Others felt helping students feel secure and happy in an atmosphere of learning without fear is an important facet of a positive classroom culture. Yet others spoke about encouraging students to speak up, to accept making mistakes as part of learning, and to maintain a bias-free environment. While most of these are indeed critical to a positive classroom culture, teachers are largely at a loss when asked how they can achieve these aims. They try very hard in intuitive ways, and many achieve the desired aims. They manage to keep some students happy, motivated, and inspired. However, for such efforts to be scalable and sustainable, a process of teaching social-emotional well-being among thinking skills is required. Not only is it important for students to learn to get along without bullying each other, conflict resolution skills are necessary as an active part of learning. Collaboration is another aspect of a positive classroom that can be taught over time by encouraging children to help each other as they progress through classwork. In traditional classrooms, most students work individually, trying and managing on their own to different degrees of success. Teachers can make the tasks easier for them, and hence for themselves, by teaching them how to seek and give help. Training students to work collaboratively often proves to be a firm foundation in teamwork that helps them through their professional lives. Often, we find that those who struggle as team players aren't the ones who lack ability, but in fact those who haven't learnt to ask for help. Unfortunately, our schooling system doesn't encourage much teamwork. Most classrooms have an each-one-for-themselves approach that later translates into an individual race for success at the workplace. Respect without fear is a concept alien in our schools. When students work with each other and co-create in classrooms, they learn to rely on each other's differentiated set of skills. Not everyone is great at everything, but everyone is great at some things, and it's crucial to tap into individual abilities. Students who learn to work together experience learning holistically, as opposed to merely understanding concepts. Another aspect of a positive classroom is allowing students some control where they can make decisions regarding classroom rules, etiquette, and take on different kinds of responsibilities. Students feel valued when they are part of a decision-making process, and where they can take on responsibility that impacts others. While teachers work hard towards engaging students, they are often reluctant to let go of control, perhaps out of fear of being perceived as soft or unable to assert authority. In fact, quite recently, a well-liked teacher at a school was told by her management to toughen up as this isn't a popularity contest. Some soft and kind teachers are not only considered pushovers, but also somehow non-serious, as if being liked by the students shouldn't be high on their priority list. This mindset is rampant and counterintuitive at best. After all, how can we expect students to be fully engaged and immersed in learning with a teacher they don't find likable? Respect without fear is a concept still alien in many of our classrooms, especially to teachers accustomed to using fear as a tool to gain respect. It would be fair to say this is a deep-rooted structural characteristic of a society that values compliance and conformism at any cost. The problem is, the road to positive classrooms is particularly rocky. We can, however, start somewhere if we wish to raise children for the 21st century. Most mainstream schools don't have a structured plan for positive classroom culture. Learners are mostly at the mercy of individual teachers who may have the self-awareness to bring positive classroom strategies into action in small daily doses through ad hoc activities and verbal efforts. The reverse is also true, where teachers' negative attitudes may erode the students' desire for learning. Mostly, such teachers are quick to discipline negative behavior in their students, but not as efficient at lauding efforts towards betterment.
Catching small acts of kindness that students show towards their peers is sometimes more important than calling out misdemeanors to discipline students. The writer is Senior Manager, Professional Development, at Oxford University Press, Pakistan, and a Fellow of the Higher Education Academy, UK. Published in Dawn, December 14, 2022. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. हाल ही में मुझे मुस्बत क्लासरूम सकाफत पर असातिज़ा के लिए एक पेशा वराना तरक्याती सेशन मुनक्कद करने के लिए कहा गया था। मैंने उनसे पूछा कि उनके सियाक व सबाक में मुस्बत क्लासरूम का क्या मतलब है। मुझे बहुत मुख्तलिफ जवाबात मिले, जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि हम अपने सीखने वालों की ज़रूरियात को किस तरह समझते हैं। कुछ असातिज़ा को यकीन था कि उनके तालिब इल्म सिर्फ सख्त मोहब्बत के माहौल में सीख सकते हैं और ये कि वो बलूगत में मुंतकिल होने के बाद इस तजुर्बे की कदर को तस्लीम करेंगे। दूसरों ने महसूस किया कि तलबा को खौफ के बगैर सीखने के माहौल में महफूज और खुश महसूस करने में मदद करना एक मुस्बत क्लासरूम सकाफत का एक अहम पहलू है। फिर भी दूसरों ने तालिब इल्मों को बोलने के लिए हौसला अफजाई करने के बारे में बात की, सीखने के हिस्से के तौर पर गलतियों को कबूल करने और तासुब से पाक माहौल को बरकरार रखने के लिए। अगरचे इनमें से ज़्यादातर वाकई एक मुस्बत क्लासरूम सकाफत के लिए अहम हैं, असातिज़ा बड़े पैमाने पर नुकसान में हैं जब उनसे पूछा जाता है कि वो इन मकासद को कैसे हासिल कर सकते हैं। वो बदही तरीकों से बहुत सख्त कोशिश करते हैं और बहुत से मतलूबा मकासद को हासिल करते हैं। वो कुछ तालिब इल्मों को खुश, हौसला अफजाई रखने का इंतज़ाम करते हैं। ताहम इस तरह की कोशिशों को स्केलेबल और पायदार होने के लिए सोचने की महारतों के माबैन मुआशरती जज्बाती फलाह व बहबूद की तालीम देने के अमल की ज़रूरत है। न सिर्फ तालिब इल्मों के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को धमकाने के बगैर मिलकर चलना सीखें, बल्कि तनाज़ात के हल की महारत सीखने के एक फ़ाल हिस्से के तौर पर ज़रूरी है। ताउन एक मुस्बत क्लासरूम का एक और पहलू है जो वक्त के साथ साथ बच्चों को एक दूसरे की मदद करने की हौसला अफजाई करके सिखाया जा सकता है, क्योंकि वो क्लास वर्क के ज़रिए तरक्की करते हैं। रिवायती क्लासरूम्स में ज़्यादातर तालिब इल्म इनफरादी तौर पर काम करते हैं, कामयाबी की मुख्तलिफ डिग्रियों के लिए अपने आप को कोशिश और इंतज़ाम करते हैं। असातिज़ा उनके लिए कामों को आसान बना सकते हैं और इस वजह से खुद के लिए उनकी मदद करने और देने का तरीका सिखाकर तालिब इल्मों को बाहमी ताउन से काम करने की तरबियत अक्सर टीम वर्क में एक मजबूत बुनियाद साबित होती है, जो उनकी पेशा वराना ज़िंदगी के ज़रिए उनकी मदद करती है। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग टीम के खिलाड़ियों के तौर पर जिदोजहद करते हैं वो नहीं हैं जो सलाहियत की कमी रखते हैं, लेकिन हकीकत में वो लोग जिन्होंने मदद के लिए पूछना नहीं सीखा है। बदकिस्मती से हमारा स्कूली निज़ाम ज़्यादा टीम वर्क की हौसला अफजाई नहीं करता है। ज़्यादातर क्लास रूम्स में हर एक अपने लिए नुक्ता नज़र होता है, जो बाद में काम की जगह पर कामयाबी के लिए इनफरादी दौर में तर्जुमा करता है। खौफ के बगैर एहतराम हमारे स्कूलों में एक तसव्वुर अजनबी है। जब तलबा एक दूसरे के साथ काम करते हैं और क्लास रूम्स में शरीक तख्लीक करते हैं तो वो एक दूसरे की मुख्तलिफ महारतों पर इन्हिसार करना सीखते हैं। हर कोई हर चीज़ में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हर कोई कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है और इनफरादी सलाहियतों में टेप करना ज़रूरी है। जो तालिब इल्म मिलकर काम करना सीखते हैं वो मजमूई तौर पर सीखने का तजुर्बा करते हैं, जैसा कि महज तसव्वुरात को समझने के बरखिलाफ है। एक मुस्बत क्लासरूम का एक और पहलू तालिब इल्मों को कुछ कंट्रोल की इजाज़त देता है, जहां वो क्लासरूम के कवायद आदाब के बारे में फ़ैसले कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियां ले सकते हैं। तालिब इल्मों को काबिल कदर महसूस होता है जब वो फैसला साजी के अमल का हिस्सा होते हैं और जहां वो दूसरों पर असर अंदाज होने वाली जिम्मेदारी ले सकते हैं। अगरचे असातिज़ा तलबा को मशगूल करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन वो अक्सर कंट्रोल छोड़ने से गुरेज़ा होते हैं, शायद इस खौफ से कि उन्हें नर्म समझा जाता है, इख्तियार पर जोर देने से कासिर होता है। दरअसल हाल ही में एक स्कूल में एक अच्छी तरह से पसंद की जाने वाली टीचर को उसकी इंतज़ामिया की तरफ से सख्त करने के लिए कहा गया था, क्योंकि यह मकबूलियत का मुकाबला नहीं है।
कुछ नर्म और मेहरबान असातिज़ा को न सिर्फ पुश ओवर समझा जाता है बल्कि किसी न किसी तरह गैर संजीदा भी समझा जाता है, जैसे कि तलबा को पसंद करना उनकी तरजीही फहरिस्त में ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जहनियत बड़े पैमाने पर और बेहतरीन तौर पर मुतजाद है। सबके बाद हम किस तरह तालिब इल्मों को मुकम्मल तौर पर मसरूफ होने की तवक्को कर सकते हैं और एक उस्ताद के साथ सीखने में डूबे हुए हैं जो वो पसंद नहीं करते। खौफ के बगैर एहतराम एक तस्वुर है जो अब भी हमारे बहुत से क्लास रूम्स में अजनबी है। खास तौर पर असातिज़ा के लिए एहतराम हासिल करने के लिए एक आले के तौर पर खौफ का इस्तेमाल करने के आदी हैं। ये कहना मुनासिब होगा कि ये एक ऐसे मुआशरे की गहरी साख्ती खुसूसियत है जो किसी भी कीमत पर तामील और मुताबकत पसंदी की कदर करती है। मसला यह है कि मुस्बत क्लास रूम्स का रास्ता खास तौर पर पथरीला है। ताहम अगर हम 21वीं सदी के लिए बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं तो हम कहीं से शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर मरकजी धारे के स्कूलों में मुस्बत क्लासरूम सकाफत के लिए एक मुनज़्ज़म मंसूबा नहीं है। सीखने वाले ज्यादातर इनफरादी असातिज़ा के रहम व करम पर होते हैं जो एडहाक सरगर्मियों और ज़बानी कोशिशों के जरिया छोटी रोजाना खुराकों में मुस्बत क्लासरूम की हिकमत अमली को अमली जामा पहनाने के लिए खुद आगाही रखते हैं। इसके बरक्स भी सच है, जहां असातिज़ा के मनफी रवैये तालिब इल्मों की सीखने की ख्वाहिश को खत्म कर सकते हैं। ज्यादातर इस तरह के असातिज़ा अपने तालिब इल्मों में मनफी रवैये को नज़्म व ज़ब्त करने में जल्दी करते हैं, लेकिन बेहतरी के लिए कोशिशों की तारीफ करने में इतने मुअस्सर नहीं है। रहम दिल्ली के छोटे छोटे कामों को पकड़ना जो तलबा अपने साथियों के साथ जाहिर करते हैं, बाज़ औक़ात तलबा को नज़्म व ज़ब्त करने के लिए बदसलूकी को बुलाने से कहीं ज्यादा अहम होता है। मज़मूर निगार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान में प्रोफेशनल डेवलपमेंट के सीनियर मैनेजर और हायर एजुकेशन एकेडमी बरतानिया के फेलो हैं। डान अखबार में शाये शुदा 14 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.